माने ना माने मुझे सीने से लगा, सोनिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, इश्क है सुहाना आप जाने जाना, रूप का फसाना आज है दिखाना. Okay, I'm live. Let me check the YouTube. Yeah, I'm live. It seems. या रावजी तुम्ही बसा भाऊजी, रावजी तुम्ही बसा भाऊजी, कोणतं मीनाचं बहरजी. Okay, jump game. You are given an integer array nums. You initially position the arrays first index, and each element in an array represents your maximum jump at that position. Return true if you can reach the last index. So I have to use mathmax for sure. Um, so need a for loop and I greater than max or farthest, then simply return false. So but max farthest is equal to math dot max of farthest, or I plus what it's saying, I plus nums I. Farthest is nothing but we have to take math dot max of farthest comma nums comma I. Hello bro, what happened? Tired? No, I'm not tired. I'm full with energy bro. No tiredness. ऑफिस का काम भी तो होता है, ऑफिस का काम खत्म करके टायर्ड दिख रहा हूँ क्या मैं? शायद मेरे बाल खराब हो गए इसके वजह से. हाउ आर यू ब्रो? You shared this site no today? This याराजी तुम्हें बसा पाओजी. My mind is not able to think the best way to solve this. So we have to reach from this index to the last index. Um, that's what we have to figure out how.
So from 2 I can go to max. Yeah, I can go to max two places, like till 3 and 1. I can go till here. From 1 I can go max 1, and then from 1 I can go 1. So we'll reach 4. So what I was trying to do, I was trying to get the farthest from the current index. So how much far I can go, for example, from this point. So I can go max 3. So I can go max 3 times, or max of nums I 3 plus I, which is 1, means 4. I can go 4. So whatever the max will go. And if uh, maybe if I is still greater than farthest, then return false. हम नहीं समझ पा रही है. So this condition is not correct, I guess. I'm getting problem because I'm not able to use Excalidraw because I don't have pen and paper. On here I was trying this, but let's try again. 3 2 1 3 2 1 0 4. Okay, from 3. So according to our logic, farthest will be 0 initially, and then once the loop starts, our farthest will be 0, max of 0, or max of nums I, which is 3 plus I. 0 means 3, so farthest will be 3. So from 3, where can we go from here? 1 2 2 and 3 will reach 0. So from 0 can't go further, but how can we get to know that we can't go further? So our farthest becomes, I don't understand max logic over here, no? So from here, I don't think max is required over here. No, I'll just erase this. It's not making any sense to me. Initial public, yeah. Today मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ा, सब लोगों ने like कर दिया, which is good. I like this. आज मैं थोड़ा कम इंटरेक्ट करूँगा ना चैट के साथ, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इस ग्रीडी एल्गोरिथम के कारण. फकिंग ग्रीडी एल्गोरिथम. Three two one zero four. Farthest we have taken 0. I think I didn't understand the question really. That's why I'm struggling. Can I watch some video? Yo, hello bro, Thorfinn. How are you? How many test cases? Maybe 20. I'm guessing 20 test cases might be getting passed.
109 out of 178, so we are close. That means we are close, but मेरा दिमाग में वो logic समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है साला. So what I am doing, let's honestly do a dry run for this second example. Okay, for this example, so farthest will become num psi is 3 and position 0, so farthest will become 3. So what we will do with 3, we'll just check the condition is farthest greater than 0 true. It's farthest greater than nums dot length is like -1, so it's 4, so it's greater than this, so no. So we'll move to the another iteration. I is now what will be the farthest value will become? It will be 2 plus 1 again 3. So for 3 it will again no false, nothing will be written. So again we'll go to 1 uh, till we'll go to 1, and what will the farthest becomes? 1 plus its position is 2 again 3, so no, 1 is also no. Then we go to 0. So num psi is 0 plus position 0 1 2 3 3, so again oh shit, oh shit, oh shit. Good sir, why just asking bro, how are you? I saw you active yesterday chatting on the Discord. There is something wrong that I found. When I went to 0, so because index is 3, it's saying it's true, but no, it's not true. When I reach to 0, I can't go further. So farthest can't be nums I plus I, you know. What about you star 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 means, is it some curse? Y कब बोला? Y कब बोला? अच्छा, व्हाट अबाउट यू, सॉरी, अरे वो मोबाइल पे छोटा दिख रहा है मेरे को, एच दिखा वो. व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, सॉरी ब्रो. अगर मैं नम साई ही लूँ, वाई मैंने वाई पढ़ा यार. पे बैन तो 3 नो 2 3, it's not ending 2, it's not ending 1, it's not ending 0, it will never end. I can add a condition if farthest is equal to sorry, nums farthest is equal to 0. How many test cases it's running right now? It is increased or decreased? 130. So nums I definitely is a wrong choice altogether. So if I add a condition, if farthest is equal to 0, then simply return false. तुम्हारी एग्जाम थी ना, कैसे रही तुम्हारी एग्जाम? ओ इट पास्ड. इट्स फेलिंग. ओके चलो, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ. दैट्स द प्रोग्रेस आई एम लाइकिंग. लेट्स सी फॉर दिस वन. Okay, when it's only one, if nums dot equal to 1, then
return true maybe. Hmm. Feels wrong. 133. Just one more test case. uh, it was cancelled because today was web development section. कैसा रहा web development का? What did you learn? Do you have any doubts in that? Okay, this example let's try. 1 1 1 1 0. Okay, so farthest initially 0, then farthest will becomes numsci, which is 1. So we can travel 1. Then for the next one, 1 is greater than 0. Yeah, 1 is greater than equal to nums dot length, which is 3. So no. Okay, then we'll go to this again 1. अच्छा रहा भाई, लेकिन मैं पिक, मेरे को दिख नहीं रहा चार्ट यहाँ पे. अम्म, अच्छा रहा भाई, लेकिन मैं पीछे बैठा था, थोड़ा पता चला. सही था, तुम दोनों का भी एग्ज़ाम था मेरे को पता है. अच्छा रहा भाई, लेकिन मैं पीछे बैठा था तो थोड़ा पता चला. ओके. एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो इसमें, वेब वेब डेवलपमेंट में समित? So I was doing try run, then it becomes 1. So 1 is 1. From 1 we can reach there, no? So it's not getting us to this. So farthest is wrong. So farthest is should be 3. 0 1 2. 2 plus 1 3. आए तो आना ही चाहिए यार, यहाँ पे आए तो आना ही चाहिए. अगर मैं आए डाल रहा हूँ तो गड़बड़ हो रहा है. कम टेस्ट केसेस पास होंगे. सी. अच्छा, it passed. This failed. 115. So is it I सही या गलत? Can you do API integration, Samit? Now that you have learnt web development, can you do API integration? नहीं भाई, अब XAMPP एंड वर्डप्रेस किया है इन 1 आवर में. अच्छा, मेरे को नहीं समझ में आया कि कंप्यूटर ग्रेड को वर्डप्रेस क्यों सिखाया जा रहा है. आई एम डाउटफुल, मे बी दे वांट यू टू नो कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, बट मैंने कभी देखा नहीं वर्डप्रेस सिखाते हुए ना कॉलेज में. तुम लोगों को नो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पता है क्या? नो कोड, लो कोड प्लेटफॉर्म्स, पावर एप्स काइंड ऑफ थिंग्स. यूज़र डेटा स्टोर करने के लिए. ओके, यूज़र डेटा स्टोर करने के लिए. डजंट फील सो राइट, बट ओके. या ब्रो, लवेबल.
I think. Good evening, bro. Mangesh. खूप दिवसानंतर after so many days, bro. Yeah, please help me out here, na. This is medium level question. I'm missing out on something. I know I have to use max somewhere, but it's not clicking me. Why should I use max? So I have seen somewhere they're using math.max here for furthest uh, comma this nums plus I. I'm still not sure why it's failing the test cases. Maybe I'm doing it wrong. It's still the same result. Still the same result. Didn't make it any end same चालू होती. अच्छा हाँ, I have seen so many people had exams, no? So now that you guys must be free, tension free for maybe at least a month from here. मेरे को ये सॉल्व करना ही है. ड्राई रन मेरे दिमाग में नहीं जा रहा. Sorry bro, I can't help. I'm still stuck in learn Python next sem. I'll help you. Yeah, of course. Focus on Python. How was your exams, Mangesh, by the way? कैसा गेला exams? I guess Mangesh and Thor, you both of you are from the same college, if I remember correctly. Can you guys again mention your college names, Mangesh and Thor, specifically two of you? I guess you are from the same college. Hmm. Bloody hell, this test case 321. This test case is fucking me over. 32104. So length is not equal to 1. ये true नहीं आएगा. Then for loop started. Then max for 3. So the max will be 3 plus 0, 3. So is 3 greater than 0? Yes. Is 3 greater than equal to this length in unknown paths 4? No, it's not. GH Raisoni Wagoli. And Thor, you are from? You are from which college? If you are still there, I can ask this guy over here also on Discord. Mm. Yeah, thanks for the likes. I can see likes are getting triggered very fast now. यार प्लीज़ हेल्प मी. मेरे को इस प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यार. यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. फारदेस्ट मैथ मैक्स नम्स प्लस आई. एम आई मिसिंग आउट ऑन सम कंडीशन? If I can write like this is greater than farthest. No, it's farthest greater than प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ है. ये गलत 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 गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो गया ये. This is the problem statement. See the description. You are given an integer array nums. You are initially positioned at the array's first index. So you will be initially here, and each element in the array represents your maximum jump at that position. That means if you are at this index and the value is 2, that means the maximum jump you can have is 2.
So 1 is will take you to 3 and 2 will take you to 1. That means the maximum you can jump is till 1. So we have to find out, like, jump, jump, jump. We can reach to the end of this array, like the fourth element of last element of this array. So from 2 we can go to 1 max, and from 1 we can go to 1, and then from 1 we can go to 4, because 1 has this index has value 1, so we just need 1. ऐसे सॉल्व करके कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है भाई. If int I equal to 0, I less than nums dot length, and let's ask. इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा पूछ लेते हैं. Don't tell me the answer, just tell me what I'm doing wrong here. Very close. The wrong part is this check. This only detects being stuck at 0, but the real condition is if the current index I is greater than farthest, then this index is unreachable. क्या? If the current index I is greater than farthest, then this index is unreachable. Your farthest becomes 1, not 0. So your code won't fail at right moment, but index 2 is unreachable. So replace your thinking from farthest 0 to I greater than 0. We thought of I greater than 0. It's saying instead of this, even though I didn't understand it, let's try. Motherfucker. बेइज्जती हो रही है भाई. क्या कहना चाह रहा है ये? farthest, so replace your thinking from farthest equal to 0. So I did farthest, whatever you were saying. I guess I should drop solving these problems, greedy problems. I'm not yet ready to solve greedy problems, it seems. भाई मेरी हिस्ट्री मत पढ़ो. Right now you do mathematics before checking this. अच्छा. ना, हमारा नाम नहीं है भाई लिस्ट में. यार हैशमै वैशमै वाले सही से सॉल्व हो रहे थे प्रॉब्लम, सॉर्टिंग वॉटिंग. साला ये ग्रीडी सॉल्व ही नहीं हो रहा है. बहनचोद. चोद ये साला. You are given an integer array nums where this, for example, this, okay.
How to pick algorithm? Why greedy algorithms? This problem maps to greedy algorithm through a short path in full flowchart. Compute max min, yes. Greedy solution, greedy algorithm. इतना ज्ञान मत दे भाई, डायरेक्ट बता मेरे को कैसे करना है. द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट्स ग्रेडी एल्गोरिथम दैट ट्रैक्स द मैक्सिमम रीचेबल पोजीशन. हाँ हाँ चल. Initialize the maximum reach, start with max 0. Okay, that we did, representing that initially we can only reach the starting point. Okay. अच्छा. Iterate through the array for each position I and its value x using enumerate. Bro, in iteration check for an condition. If current index is not reachable, then return false. This condition, no? First condition in the first loop. You are saying this condition should be at top, like this. Check if the current position is reachable. Farthest is less than I. So farthest is less than I, that's what we are checking. It means our maximum reach is less than the current position, so position I cannot be reached. Return false immediately. Okay, return false immediately. So when to do this? Let's take it out and update maximum reach. If we can reach position I, calculate how far we can jump from, then update max. Where to update max? Like here I can update max like after this if condition. Okay. Oh, it worked, bro. Mangesh, bro, it worked. There's no need for second condition. This condition. बट ट्रू कब रिटर्न होगा अगर ये कंडीशन नहीं यूज किया तो. अच्छा, you are saying no required and at the end just do this like this. Okay, really, bro? It worked, bro. थैंक्स भाई मंगेश. क्या मैं बकचोदी, मेरे दिमाग में नहीं आया अभी भी. मैं नहीं समझ पाया. अगर मैं इसको हटा दूँ तो शायद वो वन वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. अब फिर भी चला. ओ, इसका भी ज़रूरत नहीं है. इज वॉज इट दैट सिंपल इन टर्म्स ऑफ कोड? थैंक्स मंगेश. अब मेरे को समझ के लेना पड़ेगा. मेरे को सच में नहीं समझा ये कैसे हो रहा है. फिर फारदेस्ट हमने लिया कि 0. ओके, देन वी आर रनिंग सिंपली अ फॉर लूप. इज आई ग्रेटर देन फारदेस्ट means current index is 0 is greater than 0, so no. Farthest will become farthest comma nums I. On this, in this example, 3 plus 0, that is 3, so it becomes 3. Is 3 greater than farthest? No, 1 is 0. Is 1 greater than farthest? No. यो ब्रो, थैंक्स टू मंगेश. एक सेकंड में पानी बोतल लेके आया. थैंक्स भाई मंगेश. भाई
भाई मंगेश रोज आया करो यार। राज ब्रो का नाम बताओ तुम्हारा। राज ब्रो कॉलेज का नाम बताओ। हाँ भाई थॉरफिन, टेल मी योर कॉलेज नेम नो। राज तुझ्या कॉलेजचं नाव सांग, 4 वेळेस विचारलं तुला. येस ब्रो. अरे जॉइन डिस्कॉर्ड सर्वर ब्रो मंगेश, इफ यू आर ऑन डिस्कॉर्ड. इफ यू आर नॉट ऑन इवन डिस्कॉर्ड, जॉइन दिस सर्वर. मेरा कॉलेज का नाम जानकर क्या करोगे भाई, बड़ा मिडास. अबे बकचोदी मत कर भाई, इसलिए पूछा है. आई थॉट both of you, I'm thinking this Mangesh and you are from the same college, that's why I asked to confirm. भाई एक सेकंड, मेरे ये दिमाग में नहीं घुसा है. अभी क्या कर रहे थे, आई ग्रेटर देन farthest, zero greater than farthest. I was reading this, ये समझ में आ रहा था. नहीं भाई एस पी यू यू है. वागोली का है ना तुम्हारा कॉलेज, एस पी. बट मेरे एस सी ओ एस सी ओ बट एस पी पी यू कॉलेज पुणे ना. बट मेरा एस सी ओ है. क्या बोलता है भाई ये राज, कुछ समझ में नहीं आता. एस सी ओ पुणे. अच्छा सिंहगढ़ कॉलेज आया, आई रिमेम्बर सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. इसका जी एच रायसोनी है. जी एच रायसोनी शायद नागपुर में था, इफ आई वाज नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट यू सेड पुणे वाला. भाई भाई वन सजेशन पाहिजे. हाँ बोल ना मित्रा. Update, if we can reach position I, calculate how far we can jump from here. I plus x subnet max. Return, if we successfully iterate to the entire array without returning false, it means all positions up to the last index are reachable. नहीं ये हो नहीं सकता. Yeah bro, tell me what suggestion you need. That's what she said. Yeah, that's what she said. शायद मेरा कैमरा मोबाइल का चालू चाहिए था, क्योंकि मैं चैट मोबाइल में पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट लुकिंग इनटू दिस कैमरा. मेरे को नहीं समझ में आया यार ये. मेरे को ऐसे आगे जाने का मन नहीं करता. वुड somebody join the call and explain this? Cognizant all. Let's read this guy's message, it looks very serious. Cognizant आली आहे ऑफ कॅम्पससाठी आणि नेक्स्ट जुलैमध्ये परत येणार आहे ऑन कॅम्पससाठी. आणि जर मला आत्ता अप्लाय केलं तर 6 मंथसाठी मला सुपरसेटमध्ये ब्लॉक करून टाकेन. मग मी ऑफ कॅम्पसला अप्लाय करू का ऑन कॅम्पससाठी वेट करू. वापस कधी येणार आहे म्हणलं. कॉग्निझंट सध्या आलेली आहे आणि नेक्स्ट जुलैमध्ये परत येईल.
I'll be honest bro, these companies, इन कंपनी का कुछ भरोसा नहीं होता कि these companies will be back again. And don't worry about this 6 months का ब्लॉक ना, they'll, ये बहुत ही rarest of rare condition में होता है that you can't apply to such big ass companies. So right now apply right now, just go through the interview process and try to take an offer, you know. वेट मत करो जून जुलाई तक का, वो नहीं आते फिर इन कंपनी का क्वार्टरली सब प्लान चेंज होते रहता है, तुम कब वेट करोगे जुलाई एंड तक का? अगर नहीं आई तो क्या करोगे फिर बाद में? देयर इज वन अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ग्रैब इट, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर. Okay, let me watch some video on this jump game. Given an array of numbers, we are located at the first index. Now each number in the array represents the max number of jumps we can take from that spot. So we can take 1 jump to get here, or we can take 2 to get here. Then if we took this path, we could take either 1 to get here, 2 to get here, or 3 to get to the end. That is actually our goal, and since we can get to the end, we would return true. Now what we just described is actually the brute force solution of trying every single jump. That actually gives an exponential runtime. Now if our goal is to get to the finish, we'll actually iterate backwards through the array. So at this index, can we get to the... कि you guys first like getting first job is slightly difficult, you know, because there are so many different levels of colleges like IITs, NITs, state colleges, private colleges, everything. So it's slightly difficult to get a first job, but it's not that hard, you know. And just don't look for good package or something, just try to get an offer in hand first, and then you can try to get some more based on your current offer, like try off campus and all. Keep trying. Goal? No, we cannot. From over here, can we get to the goal? No, but we can from over here. So since we can get to the finish, this is actually our new goal. Now the question is, can we get here? Yes, we actually can. And obviously we can make it to the start because we start there. And so that is when we return true. Since we just iterate through the array, this is actually a big O of N solution. Here's my Python code. Follow me for more. Given an array of numbers, we are located at the first index. इसका भी मेरे को नहीं समझा. There is one way to get the best filter. Popularity. वाह भाई वाह. You got your answer bro, मंगेश? मम्मी ऑफ कैंपस ला अप्लाई करू का ऑफ कैंपस साठी या I guess you got your answer, right? When you first realize how all of this is actually working in action. Don't be confused, don't think of future that much. आज जे आहे त्याच्यावरती फोकस कर. Each element represents this. Either I take a 1 jump and reach over here, or I take 2 jumps and reach at the next position, that is 1. Correct? Similarly, if I had been standing at this staircase, that is where 3 is written, then either you can take a jump of 1, or you can take a jump of 2, or you can take a jump of 3, right? It simply means that this is the maximum jump you can make. You can obviously make smaller jumps, correct? So the problem states that if you are standing at the start position, that means right over here, is there a way that you can reach the very last step? If yes, just मेरे को 5 फोकस मिनट दो, मेरे को एक बार ये दिमाग में समझ के लेना है कैसे हो रहा है. return a true, else return a false. So for our first test case, you can see that if I'm starting at my position 2, then first of all, I take a jump of just 1 position, correct? And now, what do you see over here? Now I can take a maximum of 3 jumps. So what I will just do is, I will stand over here and take a jump of 3 positions. So you see, I was able to reach my final step, correct? So for the first test case, you will return true as your answer. अच्छा, मुझे तो ऑफ कैंपस लेना है, ऑन कैंपस कुछ कंपनीज. Similarly, let us look at a second test case.
once again, just draw a diagram so you can visualize it correctly. You are standing at this position now, correct? And once again, either you can take a jump of 3 positions, or you can take a jump of 2 positions, or you can take a jump of 1 position, correct? And now just try to visualize. No matter whatever you do, somehow you will always land on this step where you cannot take any more jumps. Think about it. If I am at the very first step, the maximum jumps I can take are 3, right? That will land me right over here. If I am at step number 2, then the maximum jumps I can make are 2. Once again, I will land at 0. If I am at this step now, once again, I can only do 1 more jump. So once again, I will be at 0. Once I am at 0, what is the maximum jump I can do? I cannot do any jump from here. So there is no way that I can reach the final staircase, correct? ये So सेम there बकचोदी is सब लोग no, बता रहे so भाई, otherwise, एक्चुअल so I सॉल्यूशन have बताओ. so if I am starting at this position, then what are the possible jumps that I can make? Either I can make 1 jump, or I can make 2 jumps, or I can make 3 jumps, right? That is equivalent to you're standing over here and you either make 1 jump or 2 jumps or 3 jumps, right? That means Something big question came up. But bro, according to my preparation, I don't think की मी आता 4 राउंड क्रॅक करू शकतो. अँड फर्स्ट राउंडचं कम्युनिकेशन असेसमेंट आहे आणि तेच माझी वीकनेस आहे. दिस to pass. Communication assessment is what? Communication assessment time is first interview असेल ना? What the fuck is communication assessment? Is it HR round or something? So you will never be prepared. जुलैमध्ये पण तुला असंच वाटणार की नाही यार माझं प्रिपरेशन नाही झालंय. तुला कधीच तुझ्या लाईफमध्ये वाटणार नाही की माझं प्रिपरेशन झालंय म्हणून. काय जर ते पर्सनॅलिटी असेसमेंट तसं टाईपचं काही असेल ना त्याच्यामध्ये ते प्रश्न विचारतात. इंग्लिश कम्युनिकेशन राऊंड असतं. ओके. सो what is your name, introduce yourself and all. Maybe if that kind of questions will be there now, so what I used to do, I used to write the scripts. काय बोलायचं आहे मला पूर्ण, म्हणजे आपल्याला इंग्लिश बोलायची एवढी सवय नसते कॉलेजमध्ये, तर सुरुवातीपासून तुझे सगळे प्रश्न इंडिया बिक्सवरती जाऊन तिथं प्रॉपर आन्सर्स दिलेले असतात. सो आणि फ्लुएन्सी इन स्पीकिंग सेम तू स्क्रिप्ट्स लिही तुझ्या जे पण मेजर 9 ते 10 क्वेश्चन्स असतात. टेल मी अबाउट युअर सेल्फ सारखे, तुझी वीकनेस काय आहे, तुझं स्ट्रॉंग पॉईंट काय आहे, हे सगळ्या गोष्टी क्वेश्चन्स लिही आणि त्याचे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिही. चॅट जीपीटी करून रिफाईन कर आणि थोडंसं ते लक्षात ठेवायची प्रयत्न कर, कारण सुरुवातीला थोडंसं पाठ करावंच लागेल. आणि मिरर समोर किंवा हॉस्टेलवर राहत असशील तर मित्रांसोबत थोडं प्रॅक्टिस कर. कारण हे बघ, आपल्याला इंग्लिश येत नाही असं नाही आहे. आपण लहानपणापासून इंग्लिश शिकत आलेलो आहे. फक्त आपल्याला ते बोलायचा कॉन्फिडन्स नसतो, तेव्हा भीती वाटत असते आपल्याला. त्यामुळे ते घाबरू नकोस, ते लिही तू स्क्रिप्ट्स लिही. मी तर डायरेक्ट टेल मी अबाउट युअर सेल्फ ॲज इट इज पूर्ण लिहून मी तर पहिले 10-15 इंटरव्ह्यूमध्ये रटून आलो होतो. डायरेक्ट बोलून यायचो. प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये ते विचारणारच. ब्रो 3 सेक्शन आहेत त्यात. कोणकोणते सेक्शन आहेत? Which 3 sections are there? जास्त पॅनिक नको करूस. बस पॅनिक केलं तर ॲक्च्युली इफ यू पॅनिक ना, डोंट ओव्हर थिंक. ब्रो काय बोल रहे हो हिंदी में बोलो यार. मेरे को लगा और कोई नहीं, यही है.
इथे काहीच रट्टा येत नाही. No, no, you can always by heart. You can always by heart the question and answers. On the spot, they will give you some topic. That's where you are thinking of, but speak confidently whatever you think about that. Online search करू शकतो का? Yes. मला म्हणत आहेस का? Are you saying it to me? I have to do online search or what? If you want mock interviews, you can take some mock interviews as well. No, online free mock interviews है बहुत सारे. So you can take any either of the mock interviews. या DSA coding round भी है. नहीं, he's saying there is only first round, no, communication assessment. If you want me to take your interview, because I have taken some interviews in the past, if you want, just come just to check your communication, I can to give you feedback. DSA काढून घेईल मी. Then fine. No, what else do you need for a engineering role? If you are good at DSA English, so you are learning since your first standard, no? अब कितने साल? Just that you don't use English that much in your day-to-day life. That's where you are lacking. So you are saying you are not actually waiting for your DSA or problem-solving skills to develop till July. You are just scared enough because of English and this communication assessment, and hence you are trying to avoid this right now. So there is no question at all. You have to give this. कौन सी company थी? Cognizant. You have to apply for this Cognizant off campus right now. Apply it and prepare it. The communication round. DSA, if you are strong, then no issues. Rest is not a big deal. And one thing which helps to like make you speak very good English, the one thing I follow is that read any one English book 2-3 days. म्हणजे तुझ्या इंटरव्ह्यूच्या आधी 2-3 दिवसापासून एक इंग्लिश पुस्तक वाच. जेवढं आपण सकाळी वाचतो ना इंग्लिश, तर आपली इंग्लिश पण चांगली निघायला लागते. 10 दिन की प्रॅक्टिस इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश मॅन. या ॲब्सल्युटली. Nobody is going to judge you on your English. Okay. If a company is judging you just based on your English, then it's not mean for you at the end. We have given candidates to speak in any language they want, like Marathi, Hindi, English. The current company which I am in, the third round, which was the actual round for this company, the manager took my complete interview in Hindi. पूरा हिंदी में लिया था. He didn't ask for any English or something, but don't worry about English bro that much. हम ये वीडियो देख रहे थे भाई, इसका If you अच्छा are था. standing at the staircase with the value 3, Check then this. you have 3 options What? to choose Check this. from. Either you do 1 jump, or you do 2 jumps, or you would do 3 jumps. Correct? You can't share And link then over here. where That's will why I you asked land you to? to come share If you it on just did a Discord. 1 jump, then you will land at index 2. Correct? If you do 2 jumps, then where do YouTube you doesn't land? allow you You to share land at links. index 1. And if you do 3 jumps, then where do you land? You land at index 0. Now with the Code value. बता भैंचो. So it simply means that you will once again have 2 different scenarios. Either you make 1 jump or you make 2 jumps. If you make 1 jump, then you land at index 1. Or if you make 2 jumps, then you land at index 0. Correct? So what is happening over here? You are making kind of a decision tree. Correct? And similarly, when you are over here at the staircase with the value 1, once again, you will just have one more position to go, and you can make 1 jump, and where Yeah, will it you won't reach? work. You will reach a index 0.
It's not in my control, it's YouTube's rules. You can't paste links in the chat. Now, when you go through this decision tree, you realize that you cannot go anywhere from here, you cannot go anywhere from here, and you cannot go anywhere from here either, right? So these are dead ends. You just have one more situation remaining. That is when you are at position 1. And even in that situation also, you will just be able to reach a 0, correct? So this is also a dead end in fact. So once you have exhausted out all of your options, you can try to see if you were able to reach an index 4 at any point of time. If yes, then you can return a true, otherwise you can return a false. So this is a kind of a recursive solution. But there is a certain problem. You see that you are computing the same case multiple number of times. Just watch over here. You have already determined that if you start from position 1, then you will reach a dead end, correct? So there is actually no need to compute it again over here. Moderator right? आया नहीं भाई. So अरे you share it on Discord मंगेश link share यहाँ पे नहीं होते. I've give you the link for this no. Share it here. Hello भाई Perf, how are you? if you are able to exams store तुम्हारे all भी? of these reverts somewhere, for example, what you do is you create a DP array. Then for each of the indexes, you can store that, hey, can I reach my last index from this position? You determine that, okay, from the first position I cannot reach, from the second position I cannot reach, from the third position I cannot reach, and so on, correct? But all of the Code approach बता and भाई. so no matter how the very last that ends. No, so that is so लोगों को शायद ये जंप वाला this will give you एक्सप्लेन a करने में optimal बहुत solution. मजा आ रहा है. इसने Now, 18 based मिनट की upon वीडियो this में idea, 15 मिनट let us बस quickly एक्सप्लेन do ही a trial किया run है. of the code and see how it works in action. कोड बोल रहा है अपने आप On the समझ लो. left side of your screen, you have the actual code to implement this solution. And on the right, once again, I have my generic array that is passed in as an input parameter to the function canJump. Now, moving on with the dry run of the code. What is the first thing that we do? First of all, we determine the All initial good sir, final what position. about you sir? That means All where you will finished. have to घर reach जाने का at the very पैकिंग करनी है कल से. अच्छा, नाइस नाइस. I remember these days from my college. All good sir, finish. अब घर जाने. मज़ा आता है जब सब खत्म हो जाता है कॉलेज वगैरह. beginning. Aren't That you is going to do num any stop kind of length minus internships? 1. That is the last position. Summer right? internships or something? So I know that I have to reach at this position currently, right? What do you do after that? You start. मैं इसको बोलता हूँ. Explain me this my code. I saw something on Discord. Mangesh. Give me some details related to first round and cognizant communication. कोई अनपेड भी नहीं देगा. Can't relate day scholar. Give me some details related to first round of cognizant communication assessment. The first round in cognizant Gen Z hiring process is usually communication assessment round. This round mainly checks your English communication skills, speaking, listening, reading and grammar. It is generally an elimination round, so clearing it is important. Okay. Pattern of the communication assessment. The pattern may slightly vary by hiring batch, but mostly it contains these sections. Reading sentences. Read sentences loudly and clearly. Acha. Repeat sentences. Listen carefully and repeat the exact sentence. Jumbled sentences. Arrange words, sentences in proper order. Okay. Question and answer. Answer simple English questions. Storytelling. Speaking. Speak on a topic for 30 to 60 seconds. The complete test is usually around 45 to 60 minutes. Is it an individual? Important sections explained. Reading sentences. You will see sentences on the screen. Technology improves human productivity. Is it a AI round? You must speak clearly, maintain proper communication, avoid too many pauses.
They check pronunciation, fluency, confidence, clarity. Repeat sentences. You will hear an audio sentences. The meeting has been postponed until tomorrow. You must repeat the exact sentence. Tips. Wear headphones. Focus carefully. Repeat naturally. Don't speak too fast. कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं दिख रहा मेरे को इसमें. Jumbled sentences. You arrange words into meaningful sentences. Market went. She to the correct. She went to the market. Mm, okay, storytelling. Okay, understood. Uh, will it be? Will this round be taken by an AI bot? या round ला bot आहे असते. Okay. Yes, most hiring. So, can you prepare me for this uh, assessment? I'm not that confident with my English right now, and I have only 5 days to prepare. Absolutely, with 5 days focused, you can become confident enough to clear the cognition communication assessment, and you have 10 days. You do not need perfect English, you need clear speaking, basic grammar, confidence, ability to continue speaking without freezing. Your 5 day cognition communication assessment plan. Okay, day one goal, start speaking without fear. Task one, read loudly 20 minutes. So, can you give me exercise to practice, and can you use your AI voice mode to make me prepare completely? Actually, 2 days. Yes, I can absolutely help you. Give you an exercise. Your first practice exercise. Exercise one, reading practice. See, ChatGPT वरतीच on using just ChatGPT तुम्हारा ये preparation करा के दे सकता है. 21st ला है first round, so 3 days you have, no? So don't think too much, bro. Who's Maverick? Who's Maverick, bro? Continue on the same chat and practice. You can use the AI mode. इथं login नहीं है. You can use uh, in mobile there is an AI mode. You can download the ChatGPT app and then you can. Oh, okay, you are the Maverick. ओके कल तो तुम बोल रहे थे पर मेरा बहुत लंबा स्टोरी है, मेरा ब्रेकअप हो गया था डिस्कॉर्ड पे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑन डिस्कॉर्ड. क्या भाई? A for loop. This is correct, ready solution. Now let's deeply understand your code. Core meaning of farthest is this. What is the farthest index I can reach so far? Initially you start at 0, so farthest reachable index is 0. Loop meaning you are scanning every index, but before using an index you ask most important check if I uh, greater than farthest. This is where I'm little confused. This is the actual confusion. कॉलेज आके छोड़ दिया था, पहले था आपके लिए बस ज्वाइन कर लिया. आई वोंट बी एक्टिव एट ऑल. नो इट्स फाइन. शिट शिट शिट. टी देना भाई. क्या? टी देना भाई. क्या भाई? एक सेकेंड. राज क्या हो गया भाई तुम्हें?
This is I have reached an index I was never able to reach that I was never able to. Let's visualize example. Nums 102 start. Currently I can reach only index I equal to 0, nums I equal to 1, 0 equal to 1. So farthest max I can reach till index 1. I should take this question off screen. Maybe it's the current solution worked because Mangesh guy helped us. भाई मंगेश, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा लिया, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, इंग्लिश की वजह से तुम लो कॉन्फिडेंस ये कर रहे हो. व्हाट्स मींस इंटर्नशिप? Internship is like when you are in college and you want industrial experience, then companies mostly give you an opportunity. It's kind of a job, but not completely job. It is called internship, where you can learn things and the money you get is mostly tax free. So company is paying you to learn from them, and if the company likes you, they will hire you without any interview. So that is what internship mostly is. Okay, so greedy ने मेरा दिमाग चाट दिया है पूरा. Even though we solved this question. जंप टू नहीं, गैस स्टेशन देखते हैं क्या है. जंप गेम मेरे दिमाग के ऊपर से गया है थोड़ा सा. गैस स्टेशन क्या है? ठीक है मंगेश, प्रिपेयर करना, अभी टाइम पास मत करो स्ट्रीम पे. यू शुड ड्रॉप द स्ट्रीम इफ यू आर स्टिल हियर. टी मीन्स गॉसिप और इनसाइडर इंफॉर्मेशन. शिट शिट टी देना भाई. ओ अच्छा. ओ बूमर. या ब्रो, आई एम बूमर. ये कब डिसाइड हुआ टी मीन्स गॉसिप और इनसाइडर इंफॉर्मेशन? There should be some Gen Z dictionary, no? Gen Z words dictionary is there? अच्छा, there is. अच्छा, it's a blog. T refers to gossip or juicy information. When you are spilling the tea, you are sharing. Oh, okay, okay. अच्छा, चाय पे चर्चा. ये तो भूल बहुत पहले से ही है सर. मैं उससे भी पहले से हूँ भाई, पर I'm older than the oldest language. Sir, I'm learning SQL right now before beside of DSA. सही है ना? हाँ हाँ. SQL is important. Just don't stop at SQL. Try to use it, no, at some place at least. एक हाथ कोई लॉगिन पेज करके उसका यूज़र नेम डेटा स्टोर करने का कोशिश करना. देन ट्राई टू सॉल्व जॉइंस वाले क्वेश्चंस. बहुत पूछते हैं जॉइंस वाले क्वेश्चंस. एलिसेस, जॉइंस, देन नॉर्मलाइजेशन, देन क्या बोलते हैं उसको, ईडी डायग्राम्स, ईआर डायग्राम, सॉरी. Should I end the stream? I solved one question. Should I end the stream? सर मैं क्या सीखूं? कौन सी ईयर में हो अभी तुम? What URL that website masking? क्या ये बहुत पहले से है सर. सर आई एम लर्निंग एसक्यूएल. कैन आई हाइड यूआरएल? एसक्यूएल के बाद आई लर्न डेवलपमेंट इन जावा, तो करूँगा उस पर कुछ प्रोजेक्ट बेसिक्स एंड ओप्स तो आता है. Java में you will not directly use SQL, you know. Java Spring Boot is a code first approach. Code first approach means you will never go to the database and uh, change anything in the tables. Everything Spring Boot will handle it. Hacker rank पे है questions SQL के.
See these questions, you can try out these questions because इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एसक्यूएल के. ये दिया दे रखा है, क्वेरी ऑल कॉलम्स अमेरिकन सिटीज, टेबल विद पॉपुलेशन लार्जर दैन दिस, द कंट्री कोड फॉर अमेरिका. एसक्यूएल अगर तुम सीख रहे हो तो माई एसक्यूएल पे सीखना, क्योंकि माई एसक्यूएल सीखने के लिए बहुत आसान एंड फास्ट है. एसक्यूएल वर्कबेंच मत यूज़ करना, जो एम एस एसक्यूएल है वो माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ करना. इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ एसक्यूएल एंड प्रैक्टिस करना बहुत आसान है इसमें, एंड इट वर्क्स वेरी वेल विथ दिस वेब सिटिंग. यू मीन शॉर्टन यूआरएल थर्ड ईयर. सर फिर मैं क्या करूँ, कुछ सजेस्ट करो बिसाइड ऑफ डीएसए, पाइथन का बेसिक्स एंड नमपाई पैंडास, मैटप्लोलिब, सीबॉर्न लाइब्रेरीज आता है अलॉन्ग विथ, जैसे मैंने बोला जावा बेसिक्स. oops, कैन आई मार्क यूआरएल वेयर आई. यहाँ पे चार्ट पढ़ना सही है यार, बहुत क्वेश्चंस आ गए. सर फिर मैं क्या करूँ, सजेस्ट करो बिसाइड डीएसए, पाइथन का बेसिक्स एंड नमपाई पैंडास, मैट प्लॉट लिप्स, सीबॉर्न लाइब्रेरीज आता है अलॉन्ग विथ, जैसे मैंने बोला था जावा बेसिक्स प्लस सूप्स आल्सो सीपीपी बेसिक्स एंड एसटीएल. कुछ प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुमने बोला कि एसक्यूएल वगैरह तुमने नहीं किया है, तो टेक अ पॉज. एसक्यूएल कर रहे हो वो वही सही है, क्योंकि एसक्यूएल इज़ अ नेक्स्ट स्टेप, यू नो. एसक्यूएल के बाद तुम एपीआई डेवलपमेंट वगैरह सीख सकते हो. गो विद द एसक्यूएल. डीएसए तुम करती हो, 100-150 क्वेश्चंस कुछ कर लिए तुमने, विच यू आर वेरी अहेड ऑफ टाइम. एसक्यूएल कर लो, कोई इशू नहीं है. कैन आई मास्क यूआरएल वेयर आई क्रिएटेड इन लवेबल दैट मेंटर्स थॉट क्रिएटेड बाय सेक्शन. नहीं, वो लवेबल पे ही तुम्हारा होस्टेड है ना, तुम्हें अलग से चेंज करना है तो यू नीड अ डीएनएस for that and host in there, or else for free hosting you can use GitHub pages. On GitHub pages you can host your practice sites. You can link directly through VS Code. Whatever you push the code, it will get deployed directly on your. जहाँ से मैं MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ, हाँ बेस्ट. नो यू कांट मास्क दैट यूआरएल में भी नहीं, वो उस पर होस्टेड है ना ब्रो, वो नहीं करने देगा तुम्हें लवेबल का. इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस थिंग, नो. कहाँ गया तुम्हारा वेबसाइट. ये उसके उस पर होस्टेड है ब्रो, वो नहीं करने देगा तुम्हें. एसक्यूएल के बाद क्या करूँ सर, पाइथन पे प्रोजेक्ट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन सीखने में क्या करूँ एसक्यूएल के बाद. एसक्यूएल के बाद तुमने करना चाहिए आइडियली एपीआई डेवलपमेंट. या तुम्हें ये भी कर सकते हो, तुम एसक्यूएल में ही ईडी ईआर डायग्राम्स बना सकते हो. जो एलएलडी होता है ना, वो एलएलडी मोस्टली डेटाबेस साइड ही सोचते हैं. मतलब तुम्हें फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट सिस्टम डिज़ाइन करना है, सो व्हाइल डिज़ाइनिंग अ पार्किंग लॉट सिस्टम यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ tables, what tables you will create, what tables you will need. जॉइंस इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट. मैंने ऑलमोस्ट 10-15 दिन MySQL सीखा था, उसमें जॉइंस वगैरह एनालिसिस ये सब प्रैक्टिस किया था. तो डू अ गुड प्रैक्टिस ऑन दैट. हैकर रैंक का ये जो मैंने बताया, ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो तुम. दीज आर नाइस क्वेश्चंस. एसक्यूएल के क्वेश्चंस तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगे. ये क्वेश्चंस यू कैन ट्राई. पेस्ट इट ऑन डिस्कॉर्ड. From hacker rank. Oh fair, any resource. I have almost zero knowledge of API. APIs
एपीआई एपीआई क्या है यही नहीं पता है तुम्हें, कि एपीआई डेवलपमेंट का ज़ीरो नॉलेज है? एपीआई क्या है ये तो मैं अभी तुम लोगों को बता सकता हूँ अच्छे से, वो भी। You don't know how to integrate API, or you don't know much about API, what API is? पर तुम्हारा वो URL हाइड नहीं होगा, ये तुम्हारा वैसे ही रहेगा लवेबल, क्योंकि तुमने उस पर बनाया है। ये साइट तुम्हें समहाउ कोड एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके खुद पे नहीं सर पता है कुछ, बस डेफिनेशन का एकदम थोड़ा सा सर नहीं पता कुछ, बस डेफिनेशन का एकदम थोड़ा सा आइडिया। ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एपीआई कैसे होता है। एकदम सिंपल सा कोई साइट बताओ जिस पे डेटा आता है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ही देख लेते। मेरे को कोई सिंपल एक साइट देखने दो जो मेरे अभी बैंडविड्थ पे भी चलेगा। सिंपल साइट्स वेयर सिंपल APIs आर इंटीग्रेटेड, अच्छे से बताता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो API मतलब क्या होता है ना, API इज नथिंग बट अ जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, जेसन ऑब्जेक्ट मतलब उसका अगर लॉन्ग फॉर्म देखो, जेसन लॉन्ग फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना वैसे ही एक जेसन ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका है। ठीक है, सो मॉडर्न एपीआईज तुम्हें हमेशा जेसन में ही रिप्लाई देंगे, जेसन ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हें चाहिए। सो जस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सारी वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट है वो सारी वेबसाइट तुम्हें डेटा लाके देती है। तो मैं तुम्हें कोई साइट का एपीआई, कोई भी साइट हो, अब हमारा एज अ वेब डेवलपर योर टास्क इज टू क्रिएट एपीआईज, यू नो। सो देर आर n डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज जहाँ से डेटा आता है। अब कोई एपीआई में इनके डेटा हो, सो लेट मी फिल्टर दिस। तुम कोई भी साइट पे जाके इंस्पेक्ट करोगे, आई शो यू। ओके, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एंड गो टू द नेटवर्क टैब। ओके, लेट मी रिफ्रेश इट। ऑल दीज आर एपीआईज। ओके, इसमें एपीआई भी है, कंटेंट भी है। फिल्टर कहाँ गया यहाँ पे? हाँ, फेच एक्सएचआर। सो दीज आर ऑल एपीआईज, यू नो। आई शो यू कोई एपीआई में डेटा हो तो मज़ा आ जाएगा। सारे अभी खाली है। ये अमेजोन का सिक्योरिटी होता है ना, वो इतने आसानी से नहीं लेने डेटा देता। ये भी नहीं है। कोई सिंपल सी साइट, मेरा अगर ऑफिस लैपटॉप होता तो मैं तुम्हें दिखा देता एपीआई। सी दिस इज आल्सो एपीआई। अब इसमें क्या है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, ये यूआरएल तुम्हें हिट करना है। ठीक है, एपीआई में अलग अलग रिक्वेस्ट मेथड होते हैं, उसमें होता है गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट वगैरह। सो ये गेट मेथड है। गेट मेथड का काम होता है तुम्हें डेटा लाके देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनपुट। उसमें तुम्हें इनपुट कुछ नहीं देना होता है, वो तुम्हें एक रिस्पॉन्स ला के देगा। और ये पूरा रिस्पॉन्स है, इसका प्रीव्यू है। इसमें दिया अलग अलग एंटिटीज। एंटिटीज मतलब ये नथिंग बट बाय ऑप्शन। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना प्रोडक्ट्स वगैरह, इन सब का डिटेल्स है ये।
अलग अलग ये डिज़ाइन करना होता है जब तुम टेबल्स बनाते हो ना, टेबल्स के साथ तुम्हें ये सब डिज़ाइन करना होता है। एंड इन दिस वन यू कैन सी ऑल फकिंग information for this page is there. So what user had did, user called this through request URL, method type is get, status code 200 OK means response is received. There are different status code. 404 you might know. API is nothing but bridge between, हाँ मैं बता रहा हूँ वो bridge वगैरह, क्योंकि दिस गाइज आर न्यू, मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड नहीं करना है। फिर ऑथेंटिकेशन में मतलब कोई भी डेटा नहीं लेके आ सकता। अभी हमने लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद एक यूज़र का टोकन जनरेट होता है, सो वी पास द टोकन इन दिस वन। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स दैट वी कैन पास। ओके, इन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है टोकन्स अलग अलग इसमें। सो ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। रिस्पॉन्स इज दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस रिस्पॉन्स। अगर तुम्हें प्रीव्यू देखना है शॉर्ट में तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रीव्यू। अगर पूरा रिस्पॉन्स देखना है तो दिस इज द कंप्लीट जेसन ऑब्जेक्ट विच इज़ नथिंग बट द एपीआई। सो ये बहुत ही मुश्किल एपीआई है, इतना बड़ा एपीआई तुम अभी नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे ऐसे छोटे सिंपल से एपीआईज। सो देर इज़ अ टूल टू ट्राई योर एपीआईज। सो कोई भी तुम लैंग्वेज ले लो, बीट पाइथन जैंगो और जावा स्प्रिंग बूट और डॉट नेट enterprise application, whatever, there will you will create these links only. Okay, so if I go and उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट नेट सैम्पल APIs पेज, HTML पेज, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। सो तुम्हारा एंड गोल मैं यही बता रहा हूँ। सो अभी पेन पेपर नहीं है मेरे पास यहाँ दिखाने के लिए। डेटाबेस से डेटा ले आओ। API हैज़ थ्री layers, the first three primary layers. First layer is controller from your code. कंट्रोलर से तुम सर्विस कॉल करोगे और सर्विस से तुम रिपोजिटरी कॉल करोगे, और रिपोजिटरी से कहाँ कॉल जाएगा? रिपोजिटरी इज नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ द टेबल्स, डेटाबेस टेबल्स दैट यू हैव इन SQL। नहीं, वो मैंने स्किप किया ब्रो। तो यही है API। पेन पेपर होता है मैं तुम्हें अच्छे से और समझाता। ये API बैकएंड का काम, देर इज बैकएंड, देर इज फ्रंट एंड। सो ऑन द बैकएंड, बैकएंड वाला तुम्हें विल, सो दिस इज दिस इज बैकएंड जो तुम्हें एट द एंड APIs देगा। ठीक है, बैकएंड को कॉल करना है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड को कॉल करना है बैकएंड को। ये एरो ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैकएंड को कैसे कॉल करेगा? API बोलेगा कि मेरे को भाई मैं API कॉल दे रहा हूँ इसको बैकएंड को, बैकएंड और बैकएंड मेरे को डेटा दे। तो बैकएंड मेरे को डेटा देगा इन फॉर्म ऑफ जेसन, जेसन ऑब्जेक्ट। और फ्रंट एंड क्या करेगा? वो जेसन ऑब्जेक्ट को लेके फ्रंट एंड will call the API and wait for the, ये नीचे लिखता हूँ, wait for the response। और जो भी रिस्पॉन्स में डेटा है तुम्हें वो डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट ऑब्जेक्ट कीज, जो भी कीज है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये रिस्पॉन्स है तुम्हारा, और तुम्हें बस यूज़र आईडी दिखाना है, तो यू विल जस्ट यूज़ दिस की, यू नो, यूज़र आईडी। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट यूज़र आईडी, तो तुम्हें वैल्यूज़ मिलेगी सारी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। पर ने गिव अप कर दिया, कोई नहीं, मैं सीख लूँगा। ठीक है भाई। used to form communication between front end and, you know,
तुम लोगों को एक फैक्ट पता है, ये एपीआई है ना, एक कॉलेज स्टूडेंट का ही असाइनमेंट प्रोजेक्ट था, जो कि इतना पॉपुलर हो गया है कि नाउ द होल वर्ल्ड इज रन ऑन एपीआईज। किसी का कॉलेज प्रोजेक्ट था जो कि पूरी दुनिया यूज करती है आज। ज़्यादा कोई नहीं सर, मैं सीख लूँगा आईटी से। सीख लो सीख लो। वेब डेवलपमेंट में यही है, एक रोल बैकएंड का होता है, एक फ्रंट एंड का होता है, और बस अलग अलग एपीआईज बनाओ, टेबल्स बनाओ, फ्रंट एंड पे जाके कंज्यूम करो, यही जॉब है तुम्हारा। गाइस प्लीज लाइक कर दो यार स्ट्रीम को, मेरे को लाइक्स नहीं दिख रहे यहाँ आज। ओनली 3 likes आई कैन सी, प्लीज लाइक द स्ट्रीम। आई एम अबाउट टू एंड। मैं घर पे बैठ के ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। यस सीख लो भाई। गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। I'll come up with some new things over here also. मेरे पास कुछ स्प्रिंग बूट का भी आया हुआ है मेरे को करने के लिए। हम्म, there is क्वेश्चन में अभी ऑफ स्ट्रीम करके आ जाऊंगा भाई, ग्रीडी अब नहीं करूंगा मैं ऑन स्ट्रीम, मुश्किल हो रहा है। ठीक है चलो गाइस, आई एंड द स्ट्रीम। घर से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग बैक टू पुणे एंड देन अपने बेसिक स्टेट, अपने पूरे सेटअप के साथ आई विल बी बैक। Okay, please guys do like the stream. I'm not seeing many likes today, so it's very important that you guys should like the stream. I have talked with many, but I don't see that many likes on the stream. So please do like the stream, and please keep an eye on this. Please keep an eye on this corner. I'll be coming up with newer ideas, newer things. Your laptop cost, I'm buying Mac. Okay, my laptop cost when I bought it, it was 2.5 something, 2.5 lakhs. Yeah, good night Perf and happy journey. जब घर जाओगे तब ज्वाइन कर लेना। यार आज बाय। मैकबुक प्रो ही लेना अगर ले रहे तो समित। बजट का अगर इशू नहीं है तो मैकबुक प्रो ही लेना कोई भी। ओके चलो बाय बाय। मैं आता हूँ और प्रिपरेशन के साथ, थोड़ा प्रिपरेशन कम पड़ रहा है मेरा। आई विल बी बैक। अभी एसक्यूएल करता हूँ, फिर तुम्हें एक्चुअली कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ ब्राइट किड। मॉडरेट की वाइल्ड कार्ड एंट्री, मॉडरेट की वाइल्ड कार्ड एंट्री जब स्ट्रीम ख़त्म हो रही है तब आ रही है भाई। आई एम डाउटिंग दैट मीट हैज़ मेट हिज गर्ल। सो उसका टाइम होता है 10 से 11:30। कल भी मैंने देखा कम्स। कितने का पड़ेगा भाई यार? 2 जनरेशन ओल्ड मैकबुक प्रो लेना अगर लेना है तो, क्योंकि वो चिप्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एवरी आर्म चिपसेट इज़ फकिंग क्रेजी, इट डजेंट मैटर M2 M4 M5। अभी M5 चल रहा है तो तुम्हें M3 मिलेगा, सो M3 Pro इज़ वेरी गुड। सो M3 Pro ले लेना, तुम्हें 1.89 2 लाख तक पड़ेगा। हाई एंड स्पेक्स अगर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, साइज़ 14 इंच साइज़ और ये सब, तो तुम्हें 1.4 लैक्स में भी मैकबुक M3 Pro मिल जाएगा।
अगर तुम पुणे से होते तो मैं तुम्हें दुकान भी बता देता, वो बहुत ही बढ़िया ये देता है, बैंगलोर के वेयर हाउस से सीधा तुम्हारे पास विदाउट एनी थर्ड पार्टी. Bro, my girl is new Vim Obsidian setup for Note. Taking that is what I am doing, bro. I don't worry, I have my goals clear. भाई अपने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से गर्लफ्रेंड बनाना इज़ अ रॉन्ग थिंग, बट इट इज़ नॉट. वो भी एक पार्ट है लाइफ का. इफ़ यू मीट यू इफ यू फाइंड सम गुड पर्सन देन टेक इट टू द लाइफ. इट्स नॉट रॉन्ग. उतना नहीं है. 85K. 85K है तो मैकबुक मत लेना, आई सजेस्ट. तुम फिर जाओगे वो मैकबुक एयर और वो न्यू जो भी आया है उसका नया लैपटॉप, इट्स नॉट वर्थ इट ना. उससे अच्छा है कि तुम फिर कोई विंडोज़ ले लो. 85K में अच्छा विंडोज़ लैपटॉप आ जाएगा तुम्हें. गाइस तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना, आई डोंट नो व्हाई. जिस दिन मैं फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उस दिन मैंने देखा है व्यूअरशिप बहुत स्पाइक होती है. नाउ आई एम फेलिंग इन दैट, सो इट्स ऑन मी नाउ. 85K में ब्रो डोंट गो फॉर अ मैकबुक. विंडोज़ में बहुत सारे ऑप्शन है यार, वो देखना पड़ेगा तुम्हें. गेमिंग वेमिंग लैपटॉप्स भी है उसमें अच्छे से. यू कैन बाय एनी गेमिंग लैपटॉप. वो सर्च करना पड़ेगा, मेरे को अभी पता नहीं है. आई डोंट हैव इट ऑन माय फिंगर टिप्स. ओके चलो, बहुत टाइम पास हो गया. बाय बाय गाइस, सी यू डे आफ्टर टुमारो. कल आई विल बी ट्रैवलिंग बैक टू पुणे, सो उसके बाद मिलते हैं. चलो बाय बाय. ये मेरे को एनिमेशन बहुत मस्त